Minister Shri Narendra Modi ji, Excellencies, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony where one document will be exchanged. We have the 3-year strategic program of cooperation, South Africa and India, 2019-2021. This will be exchanged on the South African side by Her Excellency Ms. Lindiwe Sisulu, Minister of International Relations and Cooperation, and on the Indian side by Srimati Sushma Swaraj, Minister of External Affairs. Excellencies, this concludes the agreement exchange ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this press event. To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his statement to the media. Your Excellency, President Ramaphosa, दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आए सभी विशिष्ट अतिथिगण, फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भारत के अभिन्न मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा आज हमारे बीच में मौजूद है। उनके लिए भारत नया नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है और उनकी यह भारत यात्रा हमारे संबंधों के एक विशेष मुकाम पर हो रही है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है और पिछला वर्ष नेल्सन मंडेला जी की जन्म शताब्दी का वर्ष था और पिछले साल हमारे राजनयिक संबंधों की रजत जयंती भी थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस विशेष मुकाम पर राष्ट्रपति रामाफोसा भारत आए हैं और उनकी यह भारत यात्रा हमारे लिए और भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि कल वे भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह सम्मान और गौरव वे हमें दे रहे हैं, इसके लिए समस्त भारत उनका आभारी है। फ्रेंड्स, 2016 में जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया था, उस समय मेरी राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ पहली मुलाकात हुई थी। उस समय वे उपराष्ट्रपति थे और हमारी उस पहली मुलाकात में ही मैंने भारत के प्रति उनके उत्साह और स्नेह का अनुभव किया था। पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के समय मैंने उनके शानदार आतिथ्य सत्कार का अनुभव किया। हालांकि दिल्ली में सर्दी का मौसम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में राष्ट्रपति रामाफोसा भी भारत के गर्मजोशी भरे स्वागत को अवश्य महसूस करेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति जी के साथ बातचीत में हमने अपने संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की। हमारे बीच व्यापार एवं निवेश के संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो रहे हैं। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $10 बिलियन से भी अधिक है। इस वर्ष वाइब्रेंट गुजरात में दक्षिण अफ्रीका पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया और दक्षिण अफ्रीका में निवेश बढ़ाने के राष्ट्रपति रामाफोसा के प्रयासों में भारतीय कंपनियां
बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। दक्षिण अफ्रीका के कौशल विकास प्रयासों में भी हम साझेदार हैं। प्रिटोरिया में शीघ्र ही गांधी मंडेला स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना होने वाली है और हम दोनों इन संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसलिए आज कुछ ही देर में हम दोनों देशों के प्रमुख बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। फ्रेंड्स, विश्व का मानचित्र देखें तो यह स्पष्ट है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही इंडियन ओशन में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। हम दोनों विविधताओं से परिपूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की विरासत के उत्तराधिकारी हैं और इसलिए हम दोनों का व्यापक वैश्विक नजरिया एक दूसरे से काफी मेल रखता है। ब्रिक्स, G20, इंडियन ओशन रिन एसोसिएशन, इप्सा जैसे अनेक मंचों पर हमारा आपसी सहयोग और समन्वय बहुत ही मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर भी हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी की इस भारत यात्रा के कार्यक्रम का एक विशेष अंग आज आयोजित किया जा रहा पहला गांधी मंडेला फोरम लेक्चर होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा भारत और पूरा दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति जी के विचार सुनने के लिए उत्सुक है। फ्रेंड्स, कल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामाफोसा की उपस्थिति और मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने की हमारी साझी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. May I now invite the President of the Republic of South Africa, His Excellency Mr. Cyril Ramaphosa, to deliver his statement. Thank you. Thank you very much. Prime Minister Modi, ministers and deputy ministers, ambassadors, honored guests, and ladies and gentlemen and members of the press. Prime Minister Modi, thank you very much for welcoming us to mild-wintered Delhi. We have just come back from Davos, where the temperature was minus 16. So it is a real joy and a pleasure to be in the warm climate of Delhi at this time of the day. And we also look forward, moving from the warmth of your reception, we look forward to having some hot Indian food later on this afternoon. Prime Minister Modi and I, and along with our respective delegations, have just concluded fruitful talks that have been aimed at deepening the relationship between South Africa and India. To South Africa, India is a strategic partner, and I'm most honored to have been invited to pay a state visit to India at this point in time. I'm also extremely honored by the invitation to attend tomorrow's Republic Day celebrations as chief guest of honor. I'm accompanied during this visit by a high-powered delegation of cabinet ministers and senior officials in our government. This in itself is a reflection of the importance which South Africa ascribes and places on its relationship with India. A strong contingent representing the South African business community has also accompanied us on this visit, and the Prime Minister and I will later on address a roundtable of business people. During our deliberations, the Prime Minister and I were in agreement that considerable scope exists for our two countries to grow
and extend and deepen our bilateral relations at a number of levels, but more particularly at the economic level. While trade has increased significantly between our two countries over the last 2 years, and India is now South Africa's second largest trading partner, we want to extend this relationship to higher levels. There are a number of areas of future cooperation between our two countries, and some of the areas where we want to extend cooperation is in the agro-processing area or sector. It is also in defense procurement, mining equipment, and technology and cooperation, also in the financial services sector. During our talks, we also reviewed the existing cordial bilateral relations between South Africa and India as encapsulated in the strategic partnership which exists between our two countries, as well as the close cooperation within a number of multilateral groupings that our two countries belong to, and where we work very closely with one another in BRICS, in IPSA, IORA, and the G20. We were also able during these talks to extend our gratitude for the support that India gave to South Africa to be elected, to be a member of the Security Council as a non-permanent member. We also remembered that South Africa and India had worked extremely well together in our first tenure as members of the Security Council, when India was also a member of the Security Council as a non-permanent member. And we assured India that our tenure on the Security Council will be to extend peace and security in the world and to strengthen the multilateral system and to ensure that developing economies are given the opportunities that they deserve to grow their economies, and that our tenure there will also be to ensure that ordinary people of the world do benefit from globalization. In order to ensure concrete deliverables, the Prime Minister and I, deliverables from these talks, we concluded this morning a 3-year strategic program of cooperation aimed at deepening the bilateral engagement between India and South Africa and ensuring that a result-oriented partnership benefits the peoples of both countries. We have instructed our ministers and officials to commence immediate implementation of this program that we have concluded in order to take our bilateral level to a higher level. It is our joy and pleasure to be here, and we also remembered very fondly the visit of our founding democracy, Nelson Mandela, when he came here, and the lecture we're going to be delivering later today is in great memory of the two icons of our two nations, Mandela and Gandhi. And it is in honor of these two icons that we have also come to pay a visit to India. And Prime Minister, we would like to thank you for having extended this visit to us, and thank you very much. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining.